Dear students, in this topic we shall discuss thermoreception. Thermoreception is the sense by which an organism perceives hot or cold temperatures. Thermoreception takes place with the help of thermoreceptors. Thermoreceptors are located in the skin, on the upper surface of tongue, and they are also present in the anterior hypothalamus. The skin thermoreceptors detect changes in environmental temperature, while the thermoreceptors present in the anterior hypothalamus detect changes in the body's core temperature. The thermoreceptors are phasic type of receptors. ये जो phasic type of receptors होते हैं, they are highly sensitive and they respond rapidly to minute changes in temperature. However, these types of receptors adapt very quickly and quit responding if the stimulus persists. अगर stimulus persist करता है तो ये फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उसके बाद अडेप्ट कर जाएंगे और फिर इंपल्सेस जनरेट नहीं करते. ऐसे रिसेप्टर्स को फेजिक रिसेप्टर्स कहते हैं और ये हमने जान लिया कि थर्मोरिसेप्टर्स आर फेजिक रिसेप्टर्स. There are two types of thermoreceptors which are present in the external skin and upper surface of tongue. These two types are the cold receptors and warm receptors or warmth receptors. Both these types of receptors are quite sensitive and enable the humans to detect temperatures with too much accuracy that their limit can be as low as 0.01 degree centigrade variation. इतनी सी भी वेरिएशन हो तो टेम्परेचर को बॉडी के ये वाले थर्मोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं. Now we shall discuss these two types of receptors in detail. The cold receptors are 3.5 times more in the skin as compared to the warmth receptors. These receptors consist of free nerve endings of neurons which have thin and myelinated A sigma fibers. These fibers have faster conduction speed of about 19 meters per second. They increase their firing rate when skin is cooled below body temperature. The warmth receptors also consist of free nerve endings, but their neurons have unmyelinated C fibers. These fibers have low conduction speed of about 0.8 meter per second. These receptors increase their firing rate when the body temperature, when the external temperature rises more than the body temperature. जो ही कोई टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा रिसीव होता है तो वार्मथ रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं. Dear students, in both types of thermoreceptors, specialized receptor proteins are present. These proteins are present in the membranes of thermoreceptors and they belong to a family of ion channel proteins which are called TRP proteins, that is transient receptor potential proteins.
ये जो टीआरपी फैमिली है रिसेप्टर्स की, ये एक बहुत बड़ी फैमिली है और इसमें बहुत सारी सब फैमिलीज हैं। हर सब फैमिली जो है मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स में इन्वॉल्व है। The TRPs involved in thermoreception are of three types: TRPA, M, and V. Out of these, TRPA and M are involved in the transduction of temperature in cold receptors, while TRPM is involved in warmth reception. These TRP ion channel proteins allow, when they are activated, they allow influx of many cations, but especially the calcium ions. The increased ionic concentration depolarizes the membrane and causes the action potentials to be generated. Dear students, the neural pathways of temperature sensation for both warm and cool sensation transduce information along the same neural pathways. Pathways दोनों के लिए सेम यूज होते हैं, कोल्ड रिसेप्शन के लिए भी और वार्म रिसेप्शन के लिए भी. The cell bodies of the neurons of the thermoreceptors which are present in the skin, in nerve endings के पीछे जो एक्सोन्स हैं और उसके पीछे जो सेल बॉडीज हैं, दो सेल बॉडीज रिजाइड इन दी डॉर्सल रूट गैंग्लियन DRG एंड ट्राइजेमिनल गैंग्लियन ऑन दी डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. तो एक्चुअली जो सेल बॉडीज हैं वो DRG में और स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न के ऊपर मौजूद होती हैं. तो दिस इज हाउ के ये जो न्यूरॉन्स हैं ये बहुत लंबे एक्सोन्स रखते हैं और इनके एक्सोन्स तो स्किन में जा रहे हैं, लेकिन जो इनकी सेल बॉडीज हैं वो DRG में और फिर स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न में मौजूद है. नाउ द पाथवे जो इस नर्व इंपल्स का बनता है वो ये कि जो डॉर्सल हॉर्न के न्यूरॉन्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं साइनेप्सिस के थ्रू ऑनवर्ड ब्रेन के थैलेमस के साथ, और वहां से फिर न्यूरॉन्स जो हैं दे कम्युनिकेट विद द हाइपोथैलेमस. इस तरह से स्किन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस और थैलेमस से हाइपोथैलेमस तक ये जो हीट की या कोल्ड की परसेप्शन है ये जाती है. एंड फाइनली द हाइपोथैलेमस इज द पार्ट विच इलिसिट्स प्रॉपर थर्मोरेगुलेटरी रिस्पॉन्स.